Welcome to our one word substitute series. In this journey, you'll learn 1000 important one word substitutions that frequently asked in various examinations. These words will improve your vocabulary, grammar, writing skills, and spoken English. Let's begin today's lesson and make your English stronger, one words at a time. Let's begin. Cause to feel embarrassed, abased, शर्मिंदा करना. A place where animals are slaughtered for the market, जहाँ पे उनको कत्ल किया जाता है. abattoir इसे बोलते हैं कसाई खाना. shortening something by omitting part of it, किसी को छोटा करना उसे बोलते हैं abbreviation, संक्षिप्त. to give up a throne voluntarily, abdicate, खाली करना, त्याग करना. voluntarily giving up of throne in favor of someone is abdication, त्याग. do away with, abolish, समाप्त करना. the original inhabitants of a country, जो मूल निवासी हैं उस जगह के, उसे बोलेंगे aborigines, मूल निवासी. an addition, a book in which it has been condensed is abridged, संग्रहित. to do away with rules, abrogate, अभिनिषेध करना, रूल से दूर भागना. move faster, accelerate, तेजी से भागना. which can be approached, जिसे हम आराम से अप्रोच कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसे बोलते हैं accessible, सुलभ. to accustom oneself in new climate is acclimatization. जनरली कभी माउंट एवरेस्ट वगैरह ट्रैवल करने से पहले हमें कुछ हाइट्स पे खुद को एक्लिमेटाइज करना पड़ता है. ए पार्टनर इन क्राइम, अकम्प्लीस, साथी. रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस एक्शन इज अकाउंटेबल, उत्तरदायी. मेक वन सेल्फ फैमिलियर विथ ए पर्सन और अ थिंग, एक्वेंट विथ, यू हैव हर्ड ऑफ इट, परिचित, किसी के बारे में आपको परिचित होना. The act of freeing a person from a charge by verdict, किसी को जज फैसला सुना के दोष मुक्त करता है, उसे बोलते हैं acquittal. someone versus in the interpretation of numerical data, actuary, munshi. the substance that can stick or cause sticking, आपको चिपचिप का जिस वजह से लगता है उसे बोलते हैं adhesive. the period between the beginning of the puberty and adulthood, it is known as adolescence, जिसे बोलते हैं किशोरावस्था. to falsify a thing by admixture or baser ingredients, उसे बोलते हैं adulteration, मिलावट. person who pilots or travel in, उसे बोलते हैं एरोनॉट्स. पायलट होता है फ्लाइट का या तो उसे बोलेंगे वायुयान चलाने वाला. साइंस ऑफ फ्लाइट्स ऑफ एरोप्लेन्स, उसे बोलेंगे एरोनॉटिक्स. आपने सुना होगा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वगैरह. तो साइंस ऑफ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स, कैसे उड़ता है उसकी साइंस को बोलते हैं एरोनॉटिक्स. फियर ऑफ हाइट्स, किसी लोगों को हाइट से डर लगता है, उसे बोलते हैं एरोफोबिया, ऊंचाई का डर. पर्सन हु क्लेम्स टू हैव ग्रेट लव फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज ब्यूटीफुल इन नेचर और आर्ट, इट इज एस्थेट. ए लिस्ट ऑफ heading of business to be transacted at a meeting is agenda, कार्यसूची. मीटिंग से पहले हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए बना के रखते हैं कि इस मीटिंग में इसको हमें डिस्कस करना है और कंक्लूजन पे आना है, तो उसे बोलते हैं एजेंडा पॉइंट्स. टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ अ डिसीज, एग्रीवेट, छेड़ना. टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस, या तो किसी ऑफेंस को आप ज़्यादा सीवियर कर रहे हैं और
टू इंटेंसिफाइंग ऑफ डिसीज, बीमारी को या तो बढ़ा रहे हैं उसे बोलते हैं एग्रीवेट करना। समवन हु अटैक्स, जो अटैक करने वाला होता है उसे बोलते हैं एग्रेसर्स। इसलिए हम बोलते हैं कि इंडिया नेवर अटैक्ड एनी नेशन, इट इज ऑलवेज अटैक्ड बाय अदर्स। और अटैक किसको किया जाता है? जो बहुत ही एग्रेसिव नहीं है, जो लोगों के साथ एडजस्ट करता है, उसे अटैक किया जाता है। सो प्लीज डोंट एडजस्ट। फियर ऑफ प्लेन, जिसे प्लेन में डर लगता है। ए फियर ऑफ पेन, उसे बोलेंगे एग्लियोफोबिया। ए पर्सन हु क्लेम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज अननोन, किसी को भगवान के एग्जिस्टेंस पे डाउट जिसे है उसे बोलते हैं एग्नोस्टिक, अज्ञेयवादी। फियर ऑफ ओपन स्पेस और क्राउड, उसे बोलेंगे एगोरोफोबिया, भीड़ से डर लगना। फियर ऑफ ओपन स्पेस और क्राउड, एगोरोफोबिया। बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्रीज, उसे बोलते हैं एलियन। अराउज हॉस्टिलिटी और डिफरेंसेस इन, एलिएनेट, हटाना। अलाउंसेस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, एलिमनी, आजकल ये बताने की जरूरत नहीं है, बिकमिंग क्वाइट कॉमन इन अ कंट्री वेयर single marriage system was there, where people were committed for lifetime. And there you see this alimony words is becoming so common among the celebrities, because they are here to enjoy the life. A story in which ideas are symbolized as people, allegory, rupak. Commencement of words with the same letter is alliteration, anuprash. An annual calendar with position of stars is almanac, panchang. A raised place on which offering to a god are made, it is altar, वेदी, जहाँ पे हम प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं। Person who loves everybody is altruist, जिस बंदे को सब अच्छे लगते हैं, कोई किसी में खामी नहीं लगती, उसे बोलेंगे altruist. Lover of mankind, उसे बोलते हैं altruist और philanthropist, जिसे मानव जाति ही प्रिय है, उसे हम बोलते हैं altruist. A man who does a thing for pleasure and not as a profession, उसे बोलते हैं amateur, शौकिया तौर पे जो हम काम करते हैं, जो उस काम में नया है, उसे बोलते हैं amateur. Fear of riding a car, से कार चलाने में भी डर लगता है, उसे बोलते हैं amaxophobia. One who represent a state in a foreign country, उसे बोलते हैं ambassador, दूत. इस नाम से गाड़ी भी फेमस है, एम्बेसडर कार, पहले राजदूतों के लिए वो होती थी, भाई इसमें जो जा रहा है बड़ा आदमी है. वन हु कैन यूज आइदर हैंड्स विथ ईज, उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्टर, जो अपने दोनों हाथों से आराम से लिख सकता है. ऑफ अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस. वन हु कैन यूज आइदर हैंड विथ ईज, उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्टर. An expression or statement that has more than one meaning is ambiguity, अस्पष्टता. तो हम लोग आज की टाइम में किसी भी वर्ड के ड्यूअल मीनिंग होते हैं, आप उस चीज को कैसे किस कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हो, तो इसे हम बोलते हैं एम्बिग्यूटी. अगला वर्ड है अनसर्टेन और अनेबल टू डिसाइड अबाउट व्हाट कोर्स टू फॉलो. एम्बिवलेंट, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो किस रास्ते पे चलना है, कैसे चलना है, तो उसे बोलते हैं एम्बिवलेंट. ए वैन विच इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्टिंग वुडेड और सीरियस पेशेंट्स इज एम्बुलेंस. वन हु इज लाइकेबल इज एमिएबल, सौम्य. पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, एमनेशिया. ए वारंट ग्रेटिंग रिलीज फ्रॉम अ पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस, एमनेस्टी, आम माफी. एनिमल विच live both on land and sea is amphibian,
उभयचरक जैसे कछुआ हुआ, मेंढक हुआ। हालांकि पानी का मेंढक अलग होता है, जमीन वाला मेंढक अलग होता है, पानी वाला समुद्र वाला कछुआ अलग होता है और जमीन पे रहने वाला अलग होता है। टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ पर्सन्स बॉडी विच इज इन्फेक्टेड इज एम्प्यूटेट। आपने वो देखा होगा जिनको आर्टिफिशियल लिम्ब लगाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं एम्प्यूटेशन। पर्सन और थिंग आउट ऑफ टाइम and out of date belongs to a different era, either earlier or later, is anachronism, काल भ्रम। जिसे लग रहा है कि भाई मैं पुराने समय का गलत समय में आ गया हूँ। आपने मूवी में देखा होगा टाइम मशीन्स आती है, लोग टाइम मशीन में टाइम को चेंज करके कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, वो ह्यूमन सोच है, कहीं भी जाया जा सकता है। एटलीस्ट हम साइकोलॉजिकली तो जा ही सकते हैं। वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, अनार्किस्ट, अराजक। हमारे दोस्तों में एक आधा ऐसा ही होता है जिसे लगता है कि मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा, लॉ एंड ऑर्डर किसी काम का नहीं है, बट इट इज इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। स्टेट ऑफ lawlessness and disorder, anarchy, physical structures, anatomy, fear of males is adrophobia, कुछ लोगों को पुरुषों से डर लगता है। One who is found of English people and their custom is anglophile, जिन्हें लग रहा है कि भाई बहुत अच्छा लगता है अंग्रेजों का कस्टम मुझे, तो ठीक है उसे बोलेंगे एंग्लोफाइल। The yearly return of a date is anniversary, which happens once in a year, it is, उसे बोलते हैं annual। Medicine which lessen pain, जो आपके पेन को कम करता है, उसे बोलते हैं anodyne। Deviation or departure from a common rule of standard is anomaly। आपने जो डिसाइड किया था, कॉमन रूल बनाए थे, आप उससे क्या कर रहे हो, डेविएट कर रहे हो। Having no known name or identity or known source, उसे बोलेंगे anonymous। कई बार आप देखेंगे कई राइटर्स हैं, पोएम्स हैं, लिखते हैं, उसमें लिखते हैं एनोनिमस, कि भाई मेरी पोएम के जो जो पर्पस है, जो वर्ड है, जो आइडिया है, वो इम्पोर्टेंट है, ना कि मेरा नाम, तो उसमें लोग लिखते हैं एनोनिमस। Fear of getting fat makes young girls stop eating, resulting in harmful impact, उसे बोलेंगे एनोरेक्सिया, आहार। The capable of being answered, an answerable person who opposes others is antagonist। Be earlier in time, go back further, antedate, समय से पूर्व, घटित होना। Room leading into a large room is anteroom। A collection of poems is anthology। Student of the development of the mankind is anthropologist। Science of the origins and social relationships of humans is anthropology। A remedy that stops or controls the effect of a poison, उसे बोलते हैं antidote। Strong dislike or hostility is antipathy। Thoroughly clean and free of disease causing organism is antiseptic। A word that expresses an opposite meaning is antonym। Lack of feeling is apathy, udasin, loss of speech, aphasia। That which causes sexual arousal is aphrodisiac। One who deserts his religion is apostate, स्वधर्म त्यागी। हालांकि आजकल ये धर्म और स्वधर्म में भी डिबेट है। हर चीज धर्म, धर्म का मतलब जो चीज फॉर ह्यूमन बीइंग इज नेसेसरी टू डन, उसमें हर चीज, हर सारे एस्पेक्ट आ जाता है। एनवायरमेंट से रिलेटेड, प्रिजर्वेशन से रिलेटेड, फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड, उसके रिलेशन से रिलेटेड, तो वो रीजन है। बाकी आप कुछ भी बिलीव करने लग जाएं तो वो भी फिर कहने को, इफ वी गो लॉफुली, इट इज ऑल्सो रिलीजन।
and you can start your own. Nowadays this is happening rapidly. Even today people are believing there is lot of religion. It's not like that. धर्म, सही चीज तो एक ही होती है भाई, ये चीज सही है जिसमें किसी काल समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि भाई धर्म यही है. A pioneer of a reform movement is apostle. Be fully aware of, appreciate. A person who has just started learning is apprentice. A place where fishes are kept, जहाँ पे मछलियों को रखते हैं उसे बोलते हैं aquarium. Animals play, plants array which lives in water उसे बोलते हैं aquatic. Fear of spiders, किसी को भाई मकड़ियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है उसे बोलेंगे arachnophobia. Phobia डर, किससे? मकड़ियों से. A person appointed by two parties to solve a dispute is arbiter. Arbitrator जनरली आप कई गेम्स में देखते हैं, चेस वगैरह में भी उसे भी आर्बिट्रेटर बोलते हैं. किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने वाला जो व्यक्ति है उसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर. द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट स्टडीज प्री हिस्टोरिक पीपल उसे बोलते हैं आर्कोलॉजी, जो पुरानी चीज़ों को स्टडी करता है. द वर्ड्स यूज इन एंशियंट टाइम बट नो लॉन्गर इन जनरल यूज नाउ इज आर्केइक, पुराने जमाने की चीज़ें, प्राचीन. वन हु प्रिपेयर्स प्लान्स फॉर बिल्डिंग्स उसे ऑब्वियसली आर्किटेक्ट बोलते हैं, जो बिल्डिंगों का प्लान बनाता है कि भाई कैसे बिल्डिंग होनी चाहिए, ये सही है कि नहीं. ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट उसे बोलते हैं आर्काइव्स. गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, एरिस्टोक्रेसी. द सीजेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइन इज नॉन एज अ आर्मिस्टाइज, युद्ध विराम. जैसे आपने बीच में देखा था यूएसए और ईरान के बीच में हुआ. A place for ammunition and weapons is arsenal. One who is guilty of firing property is arsonist. Next, 95th. One who is not interested in the pleasure of the world. Ascetic. जिसे दुनिया में क्या है उसमें सुख ही नहीं मिलता. An assembly of hearers is assemblage, जमावड़ा. Star shaped flowers is aster, जो तारे की तरह दिखने वाला फ्लावर्स है उसे बोलते हैं एस्टर. फियर ऑफ थंडर एंड लाइटिंग, एस्ट्रोफोबिया. किसी लोगों को भाई बिजली कड़कने से और लाइटनिंग से डर लगता है उसे बोलते हैं एस्ट्रोफोबिया. A person who studies the influence of heavenly bodies on human being is astrologer. And the 100th one who is skilled in the study of celestial bodies is astronomer, खगोल विज्ञान. दोस्तों आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस. इसमें आप देखेंगे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको काफ़ी इजी लगेंगे, कुछ मॉडरेट हैं और कुछ थोड़े से हल्का सा डिफ़िकल्ट है. पर ये डिफ़िकल्ट तब तक ही लगेगा जब तक आप इसको एक दो बार रिवाइज नहीं कर लेते, अदरवाइज़ ये आपको बहुत इजी लगेगा. इसमें मैं किसी भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. मेरा सोल पर्पस है हम इसे रिवाइज करें और ताकि हमारा वोकैब स्ट्रॉन्ग हो. जनरल वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, तो हर 100 वर्ड्स के बाद मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कि आर पर्पस is to cover this 1000 words in a shorter period of time. So let's move on to another 100. We will go flawlessly. If you want any changes or any extra explanation, please let me know in the comment section so that I can improve myself, and that will be very much beneficial to you and to me. So please give your valuable inputs in the comment section. So let's begin.
an institution for the maintenance and care of the mentally ill, often or other persons requiring specialized assistance is asylum. आपने देखा होगा हमने asylum शरण दी थी जो हमारे हमारे यहाँ जो भी आता है, जैसे पॉलिटिकल शरण हमने एक बार श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर को भी दिया है और तिब्बत के जो दलाई लामा थे उनको भी दिया हुआ है. A person who does not believe in God is atheist, नास्तिक. Fear of failure is एटिक्योफोबिया, जिसे असफलता से डर लगता है कि भाई किसी चीज को आप अटेम्प्ट करने से पहले ही डरने लग जा रहे हो. So please do not fear of completing this 1,000-word substitution. It hardly take few minutes. So keep going. You can also watch this video in 2x if you feels it is bit slow. So sound which can be heard is audible. A number of people listening to a lectures is audience. Study of hearing, spatially hearing defects and their treatments is audiology. A qualified accountant who inspect accounting records is auditor. A specialist who regards to ear is aurist, जो कान की बीमारियों का जानकार है. A life history written by oneself is autobiography. Government by one person, एक ही बंदा सरकार चला रहा है, उसे बोलते हैं autocracy. Person who rules without consulting the opinion of others is autocrats. Getting signature of some important person in his handwriting is autograph. Self rule is autonomy. Fear of being alone is autophobia, किसी को अकेले डर लगता है. Reprehensible acquisitiveness, insatiable desire for wealth is avarice, लोभ. Immoderately desirous of acquiring something is avaricious. A place where birds are kept is aviary. A statement which is accepted as a true without proof is axiom, कि भाई ये मान लिया जाता है, स्वयं सिद्ध है. State of being unmarried is bachelorhood. Is a story in verse is ballad. Science dealing with the motion of projectile like rockets, bombs and cells is ballistics. आपने देखा होगा, सुना होगा, बैलिस्टिक मिसाइल का ट्रायल किया. सो जो साइंस को बोलते हैं बैलिस्टिक्स. वन हु कैन नॉट पे द डेट इज बैंकरप्ट. दूसरे का जो उधार नहीं चुका पा रहा. फियर ऑफ डेप्थ, जिसे भाई गहराई से डर लगता है. सो बैथोफोबिया. कट द हेड ऑफ, बी हेड, किसी का गला काट देना उसे बोलते हैं बी हेड करना, सिर काट देना. पर्सन हु इज फाउंड ऑफ फाइटिंग, बेलिकोस, लड़ाकू. A person, nation that is involved in war is belligerent. Nation's engagement in war is belligerents. Wishing good things for another is benevolent, उदार आदमी. To surround with armed forces is besiege. Engagement to be married, betrothed. A great lover of book is bibliophile. An event which happens once in 2 years is biennial. The practice of having 2 wives or husband at a time is bigamy. One who intolerantly devoted to a particular creed is bigot. कट्टरपंथी आदमी. नहीं, मैं यही कहूँगा. उसके पास बड़ा व्यू है ही नहीं, उसके पास छोटा सा व्यू है. कुछ छोटी सी बातों को एक पंथ के हिसाब से मानेगा और उसी के हिसाब से लड़ना स्टार्ट कर देगा. सो वन हु इंटॉलरेंटली डिवोटेड टू अ पर्टिकुलर क्रीड. कुछ भी बोलोगे तो बोल देगा मैं ये कर दूंगा, मैं सिर काट दूंगा. बिगॉट, तो वो कौन है? कट्टरपंथी है. यूजिंग और नोइंग 2 languages
bilingual, life of person written by someone else is biography. One who studies the science of animals and plants is biologist. The science that studies living organism is biology. एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू इज बायोप्सी। आपने कई बार देखा होगा कुछ अचानक से बॉडी में आपको डिफरेंट दिखता है, या कोई फुंसी हो जाती है, या कोई टिश्यूज लग रहा है अब मतलब एबनॉर्मली इंक्रीज हो रहा है साइज में, तो डॉक्टर्स उसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं ताकि पता चले कि उसमें की कंडीशन क्या है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। एनिमल हैविंग 2 feet is biped. The act of speaking disrespectfully about sacred thing is blasphemy. Blasphemy law आप कई कंट्री में देखेंगे, अगर इंडिया में कर दिया जाए तो आधी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ब्लास्फेमी लॉ इंडिया में भी होना चाहिए, ताकि जो बाकी के लोग हैं, जो एक मेजॉरिटी रिलीजन के बारे में कुछ भी बोलते हैं, तो उनका अगर मुंह बंद हो गया, वो चुप हो गए, तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स की जड़ी खत्म हो गई। तो एक ब्लास्फेमी लॉ इंडिया में भी होना चाहिए, ताकि कोई बाकी लोगों को डिसरिस्पेक्ट न दे। अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग इज बोहेमियन, इन गुड फेथ bona fide, one who devotes full time in studying course books is bookworm। बोलते हैं ना, किताबी कूड़ा है। clumsy और ill bred fellow is bore, one who studies the science of plants is botanist, the branch of biology that studies plant is botany, a collection of flowers is bouquets, गुलदस्ता। किसी को पसंद है भाई, मैं अलग अलग तरीके से फ्लावर्स को कलेक्ट करूंगा। बीइंग ऑफ द प्रॉपर्टी owning classes, bourgeois, a small shop that sells reasonable clothes, cosmetics is bouquet। बुटीक आपने सुना होगा, एक बुटीक हम ओपन कर रहे हैं। So next is a factory for manufacturing of beers, brewery, a bandit or robber, brigand, gold or silver before using for manufacturing ornament is bullion, one who comes from a village and considered stupid is bumpkin। हालांकि लोगों को ये लगता है, but they village guys are very smart। स्मार्ट मतलब एक जेन्युइन सेंस में स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, हाउ टू बिहेव विद द पीपल, एक जनरल सेंस उनमें होती है, और चीज़ों को वो अलग तरीके से देखते हैं, बिकॉज दे हैव सीन द लाइफ इन फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट एंगल। ए स्मॉल हाउस with all rooms on one floor is bungalow, a collection of flags is bunting, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, जहाँ पे ऑफिशियल्स ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं, तो इट इज ब्यूरोक्रेसी। वन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस टू कमिट थेफ्ट, अब जो चोरी के उसे बोलते हैं बर्गलर। द ड्वेलिंग प्लेस इफ एन एनिमल अंडरग्राउंड, ब्यूरो, जहाँ पे अंडरग्राउंड रहने के लिए जो हॉल बनाते उसे बोलते हैं ब्यूरो। पर्सन हु होल्ड स्कॉलरशिप्स एट एन यूनिवर्सिटी इज बर्शार, one who kills animals and sells their flesh is butcher, a place where cows are sheltered is bayre, a place where treasures, stores, ammunition are hidden is cache, a person who is bad in spelling is cacographist, ugly illegible handwriting, ugly illegible handwriting is cacography, fear of अगलीनेस, केकोफोबिया, किसी चीज को मतलब बदसूरत चीज जिनको पसंद नहीं, बट एवरीथिंग एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, सो नथिंग टू फियर अबाउट। द इनफॉर्मिटी ऑफ द ओल्ड एज इज कैड्यूसिटी,
A person who writes beautiful handwriting is calligraphist. A beautiful handwriting is calligraphy. Having collusis is callous, कठोर. One who feeds on human flesh is cannibal. ऐसे मुझे एक दोस्त मिला था फ्रॉम अफ्रीका, वो बता रहा था कि भाई आप लोग ये क्या खाते, मैं क्या हम प्योर वेजिटेरियन हो, सो सैड। मैं क्या आप, कि मैंने दुनिया में कुछ नहीं है, बस ह्यूमन फ्लैश को नहीं खाया है, बाकी सब कुछ खाया है। मैंने बोला ठीक है भाई, सो अवॉइडेड भाई, ह्यूमन फ्लैश ही बचा है। इट्स ह्यूमन फ्लैश इज ऑल्सो जस्ट लाइक अनदर फ्लैश। अगर बाकी जगह आप मिक्स कर दोगे तो आपको, मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट होगा आइडेंटिफाई करना कि कुछ अलग है। सो अवॉइड इट इफ पॉसिबल। A lover of dog is canophilist. The dead body of a animal is carcass. A person who is specialist in heart disease is cardiologist. A picture drawn to make people laugh is caricature. One who lives on flesh is carnivorous. One who draws maps is cartographer. A person who was bad in spelling is cartographist. The art of making maps and charts is cartography. A complete list of things usually arranged systematically is catalogue. Soldiers who fights on horseback is cavalry. Abstaining from sexual relations is celibacy. बोलते हैं कि आपको इन सर्टेन एज तक सेलिबसी को फॉलो करना चाहिए. That will very helpful for your healthier life ahead. Abstaining from sexual intercourse is celibate. Extreme fear of beauty. अब किसी लोगों को बहुत सुंदरता से भी डर लगता है तो cellophobia. A place for burial of dead bodies is cemetery. One who is more than 100-year-old. Centenarian, the 100th anniversary or the celebration of it is centenary. Anything tending to move away from centers is centripetal. 100 years is century. Elderly woman in charge of a girl or social occasion is Caperon. Sarakshika. Be the embodiments or perfect example of. So characterize. Person who pretend to have more knowledge is charlatan. भाई किसी को लग रहा है बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो भाई वो charlatan है. An extremely deep crack or opening in the ground is chasm. One who is employed to drive a motor car. So chauffeur. A person who is blindly devoted to an idea is chauvinist. An unreal and visionary idea, chimerical. A small piece of wood is chip. A person who is an expert at penmanship, so chirographer. Person who reads palms is chiromaker. Palm reading is कैरोमसी. तो हाथ को पढ़ने की कला उसे बोलते हैं कैरोमसी. किसी के लिए जनरली पाम रीडिंग ऐसे बोलते हैं कि ये आपका नेचुरल ट्विस्टिंग की वजह से होता है. जनरली साइंस से एक्सेप्ट नहीं करता, बट इट इज़ अ डेवलप साइंस इन इंडिया कि भाई अगर सर्टेन चीज़ सर्टेन वे में हो रही है तो उसका रिजल्ट भी कुछ सर्टेन होना चाहिए. तो ऐसे करके इन्होंने डेवलप किया होगा. और इसके बारे में हालांकि मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ तो मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए. और इससे भी बीच में मैं कमेंट कर रहा हूँ, उसका सोल पर्पस यह है कि इन बिटवीन वी आर गोइंग थ्रू एंड थ्रू फॉर कॉन्टिन्यूस 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. तो आपका अटेंशन जो लूज हो रहा है उसको ग्रैब करने के लिए मैं व्यूज़ दे रहा हूँ या कुछ कमेंट कर रहा हूँ.
तो आप कमेंट करके आप अपना पॉइंट रख सकते हो. माई पर्पज इज नॉट टू आपको आपके व्यू को हर्ट करना नहीं है. ठीक है. सो आई थिंक यू रिलैक्स. We have almost completed 200 one-word substitutions. We left with 800 more. It's not much. Please keep tuned with me. We'll complete it soon. So let's start from 201. The first one is specialist who take care of a ailment of the feet is chiropodist. One who teaches dancing is choreographer. The science of colors is chromatics. Calendar of event in order of occurrences, chronology. Method of talking in a roundabout ways, circumlocution. Fear of doctors, claustrophobia. Fear of going to bed, clinophobia. A place for luggage at railway station is cloakroom. An associate that one works with is colleague. People who works together is colleagues. Information expression used in everyday conversation is colloquialism. Belong to same countries compatriot. One who introduces performing artist on the stage program is compare. Performance given by a number of musicians is concert. Living in a relationship, a man and a woman living without being married is concubinage. जो बिना शादी के इकट्ठे रह रहे हैं. This is trading nowadays. It's okay if it is. A country ruled by two countries, condominium. One who sells sweets and pastries, उसे बोलेंगे कन्फेक्शनर. जनरली हम उसे बेकर भी बोलते हैं. प्रेजेंट एट ब्रिटिश बट नॉट नेसेसरी हेरिडिटरी. प्रेजेंट एट बर्थ बट नॉट नेसेसरी हेरिडिटरी, उसे बोलेंगे कॉन्गेनिटल, जन्मजात. एन असेंबली ऑफ वर्कशिपर्स, कॉन्ग्रेगेशन. A critical judge of any art and craft is connoisseur. Relationship by blood or birth is consanguinity. Compulsory enlistment for military service is conscription. A number of stars grounded together, constellation. A disease which spreads by contact is contagious, belongs to or living at the same time is contemporaries. Belongs to the same period of time is contemporary. Gradual recovery from illness is convalescent. One who is recovering health is convalescent. A funeral procession comprising a number of mourners, cortege. Metaphysical study of the origin and nature of universe is cosmology. A person who regards whole world as his country, cosmopolitan. A citizen of the world is cosmopolite. A stanza having two lines in a verse is couplet. A nursery where children's work are cared for while their parents are at work is criche. Showing a lack of judgment or experiences, credulous. A religious war is crusade. A study of a secret writing and a coded words is cryptography. Science of crystallization is crystallography. Man whose wife is unfaithful to him is cuckold. Which can be cured is curable. A person in charge of a museum is curator. A low area storm with high winds rotating about a center of a low atmospheric pressure is cyclone.
One who sneers at the aim and belief of his fellow man is cynic. Fear of dogs, xenophobia, fear of attraction, cynosure, study of cell, sy- cystology. One who pays too much attention to his clothes and appearance, dandy. An unclaimed letter, dead letter. One who cannot hear is deaf, prevent a person from admission or a right. So debar, किसी के लिए आप रोक रहे हो. So please like, comment, share and subscribe. Next word is 251st word. So polished and light-hearted person is debonair. A period of 10 years is decade. An original glass bottle for holding wines or both alcoholic drink is decanter. Act or art of rhetorical exercises, declamation. Person appointed or elected to represent others is delegate. A political leader who tries to strip up people, demagogue. The orientation of those who favors government by the people is democracy. Science of vital and social statistics is demography. Nowadays, demography change is becoming bigger issue. So of force to intimidate demonstration. The home of a large, fierce, wild animal is den. A person who gives written testimony for use in a court is deponent. Lose in value, depreciate. A doctor who treats skin diseases is dermatologist. Study of skin is dermatology. To drive a thing of its holy character is desecrate. Where neither water nor vegetation is found, it is desert. A formation of government in which single entity rules with absolute power, it despotism. One whose business is to find out criminals. He is known as detective. Become worse or disintegrated. इसे बोलते हैं deteriorate. State of being split into two parts is dichotomy. One who gives orders in a manner that permits to refusal. Dictator. Government carried on by an absolute rule. मतलब जो रूल बनाया है नो चेंजेस एकदम उसे बोलेंगे डिक्टेटरशिप. A book dealing with words in alphabetical order. Dictionary. A small allowances of food to become slim. Dieting. That which can be digested is digestible. A dabbler in the arts is dilettant. A morbid compulsion of drink is dipsomania. Fear of thirst. Dipsophobia. Song sung at burial is dirk. One who works in return for being taught the trade. Discipline. That which can be divided is divisible. A person living permanently in a certain place is domicile. The sleeping room with several beds, especially in a college or a institution, is dormitory. Old age, when a man behave like a fool, is dotage. The house of an Arab is dover. A game in which neither party wins is draw. A game that results neither in victory nor in defeat is drawn. A game or better in which neither party wins is draw or tie. A squirrel's house, home, dray.
Mania for travel is dromomania. Continuous dry weather and lack of rain and water, drought. One who deals in cattle, drover. One who cannot speak, dumb. The person who is slow in learning, dunce. Not conforming to ordinary rules of behavior, eccentric. One who studies the science relating to the church, ecclesiologist. One who studies the science relating to the church, ecclesiologist. Person with usual or odd personality, eclectic. A pastoral poem, eclogue. And the environment as it related to living organism, it is ecology. So friends, we have completed 300